Hello guys, welcome back to our channel Tech Hire Buddy. And today's topic is very important for final year students, that is, how to choose final year project. ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो कंफ्यूज्ड है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टॉपिक चूज करें, किसमें स्कोप है, फीजिबिलिटी कैसे चेक करें। और जब कंपनीज कॉलेजेस में आती है तब वो आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से ही जज करती है that should they hire you? सबसे पहले फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है देखते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सिर्फ डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये तुम्हारा पोर्टफोलियो स्किल प्रूफ डिसाइड करता है। कंपनीज प्रोजेक्ट्स देखकर हाई जज करती है कि तुमने रियल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं या नहीं। सो चूज वाइजली। सो सी दिस फ्लो चार्ट ऑन स्क्रीन। पूरा प्रोसेस एक सिंपल फ्लो चार्ट में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट। आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट कैन बी सॉफ्टवेयर डोमेन, हार्डवेयर डोमेन, डिजाइन, ऑटोमोबाइल और एनीथिंग एल्स। देन सेकंड इज प्रॉब्लम। You should know real world problems and you should try to solve those. You should know why am I doing this project. Third is feasibility. Which resources you are using and project specific timeline. Fourth is scope. You should know how this project will help others in future. As well as technology which you are using is good start for career. Because you will get more enough time to learn new technology, so make sure you can learn something new and relevant for future. See what is trending now, like generative AI, machine learning, DevOps. Fifth are resources. Like research papers, softwares, hardwares, lab access. Make sure you will get this all at initial phase, so you can proceed further fastly. Then sixth is mentor. This is very important. Choose mentor according to your project. If your project is in software domain and your guide have hardware knowledge, then he can't help you. So, make sure while choosing guide he can support you in critical situations. Seventh is timeline. I will suggest make diary and write all your plan and ideas for project. Make realistic milestone plan and execute it. And last are deliverables. Make sure your prototype, report, presentation, video demos all are ready within timeline. So let's see every point in detail. Step 1. Choose the broad domain. Computer science, electronics, mechanical, automobile, in these domains you can work. तुम्हें जिस भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स एक से समझ आते हैं, जहां तुम ऑलरेडी थोड़ा कंफर्टेबल हो, वहां से स्टार्ट करो। Even if you are from non-tech domain, you can do your project in software domain. And if you want to become entrepreneur, then try to work on industry fit ideas. Like for CA student, web app, Android app, ML model. For mechanical, CAD design plus prototype. For ECE, sensor plus embedded system. Step 2. Identify a real problem. अब अगर डोमेन फिक्स हो गया हो तो अगला स्टेप है फाइंडिंग प्रॉब्लम। ये तो तरीके से होता है। रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च पेपर्स। देखो डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, एंड रिसर्च पेपर्स से लिटरेचर पढ़कर फाइंड करो क्या अनरिजॉल्व्ड है। प्रॉब्लम को एक क्लियर क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। हाउ कैन वी, या is it possible to? For example, how can village bakeries reduce electricity cost using low-cost automation? What we can do for skin problems? Make sure problem का impact और scope दोनों clear हो। Impact मतलब किसको help करेगा, scope मतलब इसे future में क्या होगा। Step 3. Check feasibility. इसमें time, budget, डेटा, लर्निंग स्किल्स ये फैक्टर्स इंक्लूडेड है।
आपके पास कितने मंथ्स है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए? जनरली 6 to 12 मंथ्स होते हैं। क्या आपको रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, मैथमेटिकल स्किल्स 8 है? अगर नहीं, क्या सीख सकते हो? Tools and softwares like MATLAB, CAD, Arduino, Cloud Services। और इसके साथ ही बजट, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डोमेन में है तो मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन का कॉस्ट आएगा। बट इफ प्रोजेक्ट इज इन हार्डवेयर डोमेन, then there will be cost of various sensors, modules, components, printing. Then, data. अगर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट है तो डेटा वर्क्स लाइक किंग। डाटा सेट्स कैगल और अदर प्लेटफॉर्म्स से मिल जाते हैं। देन गेट एक्सेस टू लैब मशीन्स, वर्कशॉप और एक्सटर्नल कोलैबोरेटर्स। ये सब का एक्सेस मिलने से प्रोजेक्ट का ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। बस रियलिस्टिक प्लान बनाओ और उस पे वर्क करो। देन स्टेप 4 इज डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। अब प्रॉब्लम ढूंढ के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप डिफाइन करो। यूज स्मार्ट क्राइटेरिया: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। You should clearly know why you are doing this project. Step 5 is literature survey. हर प्रोजेक्ट में लिटरेचर सर्वे जरूरी है। पेपर्स पढ़ने से तुम समझ पाओगे क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और तुम्हारा क्या एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। आपके प्रोजेक्ट में आप क्या न्यू थिंग्स ऐड कर सकते हो। सर्च ऑन सोर्सेज लाइक गूगल स्कॉलर, IEEE, GitHub, GitLab, and even YouTube project demos. How to do it quickly? Read 10 to 15 key papers, go through links, short notes, methods and data sets, summarize करो, उससे जो कंटेंट माइल उस पे अच्छे से स्टडी करके लिटरेचर सर्वे में ऐड करो। आपको कॉलेज में रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश करने पड़ते हैं, तो इससे आपको जो नॉलेज मिलेगा वो आप अपने पेपर वर्क में यूज कर सकते हो। Step 6 is plan methodology and choose tools. मेथडोलॉजी डिफाइन करो। रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स में ये होता है: डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल और एल्गोरिदम, इवैल्यूएशन, देन डिप्लॉयमेंट। फॉर हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स, डिजाइन, सिमुलेशन, फैब्रिकेट एंड टेस्ट। चूज टूल्स बेस्ड ऑन feasibility. Python and TensorFlow for machine learning projects. Arduino or ESP32 for embedded. SolidWorks for CAD. MATLAB for simulations. और अगर टीम है तो responsibilities split करो। One person can do data collection. One can work on training module, data extraction or model making. One can build UI and hardware. So, by dividing work, everyone can focus on specific area and can get proper and best results. Step 7 is timeline, milestones and deliverables. बिना timeline के project अधूरा रहता है। Make a Gantt chart or simple milestone plan. For example, 5-month plan. In month 1, you can work on literature plus data collection plan. Then in month 2, initial prototype or model. In month 3, testing and improvements. Month 4, final prototype plus performance optimization. In month 5, documentation, video demo and presentation. हर milestone के लिए measurable deliverable रखो। Dataset, source code, working prototype, report chapters, ये सब specific targets रख के achieve करना easy हो जाता है। Then, step 8 is team and mentor dynamics. अगर टीम में काम कर रहे हो तो roles define करो। As I mentioned earlier, divide your work for better results. Good teams have leader or integrator who coordinates with team. Core developer. Designer is who builds main system. Hardware person. For sensors, fabrication. Tester or QA. Ensures reliability. Documenter.
writes report. After that, mentor selection बहुत important है. Choose a faculty member whose interest matches your topic. उनको regular updates दो, weekly या bi-weekly. और उनके feedback को seriously लो. Maintain a shared repository on GitHub and weekly meeting notes. This diary and work will help you at NSEM exam. Step 9 is documentation and report structure. Documentation final deliverable है. Standard structure of report is abstract of 150 to 200 words, introduction, literature review, problem statement, methodology, results, discussion, conclusion, future work, references. Appendix which includes code snippets, dataset details. हर chapter को clear headings और figures do. Figures and tables को properly label करो. और code को clean रखना. Code में comments add करो, so you can easily explain codes to examiner. Show a sample report pages. Demo में sequence simple रखो. Problem statement in 1 to 2 lines. What you built. In live demo, show the prototype working. Performance metrics like accuracy, latency, power. Prepare for short Q&A which can be asked in exam. Know your limitations. अगर कोई question आता है जिसका आंसर नहीं पता, admit honestly and explain how you'd find out. Confidence and clarity matter more than pretending. अब कुछ common mistakes. जैसे कि overambitious scope. No data plan. Keep backups of code and data. Don't start late ignoring mentor. Always remember, regular feedback saves time. If you have any small problem in project, then tell your mentor. Avoid these things by realistic planning, weekly sprints, and peer reviews. Let's see some quick examples. If you are doing project for skin problem detection, then you should firstly think that what can be done for detecting skin problem. Like, I will suggest, you can make one website in that you can directly give inputs of your problem and you will get output of disease. Or else, you can use machine learning and image processing by directly clicking photo of diseased area and will get output which disease is caused. Also the list of doctors according to inputs given while registering. So, in this way, you can work on any project. Then, second is ML Resume Screener. It collects resumes and hiring outcomes, then feature extraction based on skills, experience. Then, train model to rank candidates, making web dashboards for HR. Third is low-cost water quality tester. Specifically for ECE chemical students. Sensor array for pH, turbidity, microcontroller plus data logger, web visualization, local testing kit. हर project में objectives, required tools, timeline और deliverables mention करो. Let's see how to find ideas. First choose your working domain. Like, if software then you wants to work on, web development or Android development or machine learning or image processing projects. If you wants to work in hardware then specifically on sensor, actuators or in automobile industry. See which problems are caused at industries. Talk with your professors, if they know industry people, then you can get direct industry projects via them. So, always stay in touch with them. You can visit specific company and can see problems so you can work on it. This direct industry work increases your chances to get selected in companies. Or else you can work on problems you face in daily life. Apart from this, do internships or part-time work. There you will get chance to work on projects. Faculty research. Unlisted low-hanging problems. Hackathons. Many teams convert hacks to projects. Online repos and competitions Kaggle, GitHub. Replicate and extend.
C. Daily life pain points. Observe and talk to people. Maintain a Google Documents or Notion page with short notes about each idea. Examiners typically evaluate originality, technical depth, correctness of implementation, quality of results, documentation, and presentation skills. Small but well-explained contribution often scores better than a big half-baked system. Show that you understood trade-offs. Final quick checklist. Problem clearly stated. Smart objectives. Feasibility checked. Good mentor in place. Timeline with milestones. GitHub repo plus regular commits. Record demo videos. Publish a short tech blog or on GitHub in readme mode. इससे आपको placements में plus points मिलते हैं. So friends, like, subscribe, comment, which domain do you need ideas for? Project select करना थोड़ा stressful हो सकता है, पर ये एक amazing learning opportunity भी है. Start small, iterate fast, and document everything. And best of luck. अगर आपको कुछ भी help चाहिए तो comments करो. मिलते हैं next video में.